Hi kids, we are starting a new chapter number 12, data handling. We are familiar with the pictorial representation of data. In previous class, we have studied how to collect information, data and represent it pictorially. The emphasis is given on systematic recording of data and students are expected to represent the collected information data either through a table or pictorially. तो अभी तक हम फेमिलियर है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं डेटा का एंड हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये भी पढ़ा है कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं यानी कि डेटा को कलेक्ट करते हैं उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोरियली। बेसिकली जो एम्फेसिस रहता है वो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग पर रहता है डेटा की एंड स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रिप्रेजेंट करे कलेक्टेड डेटा को चाहे टेबल की हेल्प से या फिर पिक्टोरियली। ओके, presenting data as a circle graph. Circle graph, also called pie chart, is a type of graph used to represent a part of a whole relationship. They are used to compare different parts of a whole amount. They are circular shaped graphs with the entire circle representing the whole. The circle is then split into parts or sections. Each part/section is proportional in size to the amount each part/section represents. Therefore, it is easy to make comparisons. तो अभी हम सर्कल ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको हम पाई चार्ट भी कहते हैं। ये एक तरीके का ग्राफ है जो कि अगेन रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा को यूज किया जाता है, बट वो रिप्रेजेंट करता है एज अ होल और जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो किसी पार्ट को शो करने के लिए की जाती है एंड ये डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करने के लिए, डिफरेंट पार्ट्स को कंपेयर करने के लिए एक ही चीज़ की उसके लिए यूज़ करते हैं। ऑल्सो ये सर्कुलर शेप के ग्राफ होते हैं जिसमें एंटायर सर्कल रिप्रेजेंट करता है होल को एंड जो सर्कल है वो स्प्लिट होते हैं डिफरेंट पार्ट्स और सेक्शन में। हर एक पार्ट और सेक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है साइज के जितना पार्ट और सेक्शन है, इसलिए इजी होता है कि हम कंपैरिजन कर पाए। ओके, एग्जाम्पल, द टेबल शोज द चॉइस ऑफ रेस्टोरेंट फॉर 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 रिप्रेजेंट द सेम इंफॉर्मेशन ऑन अ सर्कुलर ग्राफ। तो यहाँ पर 2 कॉलम्स हमें गिवन है, रेस्टोरेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैकडॉनल्ड्स 20 स्टूडेंट्स, पिज्जा हट 5 स्टूडेंट, डोमिनोज 5 स्टूडेंट्स एंड हल्दीराम्स 10 स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। ओके, मैकडॉनल्ड्स 20 आउट ऑफ 40, सबसे पहले इसका टोटल निकाल लेना है जितना भी आएगा। तो हमने 40 निकाल लिया, सबको टोटल करेंगे तो 40 आएगा। ओके, तो मैकडॉनल्ड्स का शेयर है 20 out of 40 means 20 upon 40 equals to 1/2 of the total. That is half of the circle is marked as McDonald. तो हम half of the circle को, इसको simplest form में हमने अभी convert किया है, राइट? तो half of the circle जो है वो हम mark करेंगे McDonald's के साथ। Then Pizza Hut के लिए 5 out of 40. So 5/40 हमने देखा 5 है। ओके, and which is equal to 1/8 of the total, that is 1/8 of the circle is marked as Pizza Hut. फिर जो 1/8 है वो पिज्जा हट के लिए मार्क करेंगे। देन सिमिलरली हमने डोमिनोज के लिए कैलकुलेशन की 5 out of 40, 5 upon 40 equals to 1/8 of the total, that is 1/8 of the circle is marked as Domino's. Then Haldiram's 10 out of 40 which is equal to 10/40 equals to 1/4 of the total, that is 1/8 of the circle is marked as हल्दीराम्स। ओके, देन हमने ये पाई चार्ट, सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होता है, उसके बाद हमने ये पाई चार्ट पर शो किया है। तो यहाँ पर हाफ जो पार्ट है दैट इज फॉर मैकडॉनल्ड्स, ओके, एंड 1/4 पार्ट इज फॉर हल्दीराम एंड द अदर 1/8 पार्ट इज फॉर पिज्जा हट मीन्स 5 एंड डोमिनोज इज फॉर 5, दैट इज ऑल्सो 1/8 पार्ट। ओके, दैट्स हाउ वी मेक द पाई चार्ट। Exercise 12A. First, the teacher asks 100 students of class 5 the name of their favorite color. The data collected is shown below. Represent this data in the circle graph by finding the fractions.
तो टीचर ने एक डेटा कलेक्ट किया कि स्टूडेंट्स को कौन सा कलर पसंद है एंड ये टेबल हमें गिवन है. सबसे पहले हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, फिर उस डेटा को इस पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है. ओके, सो फेवरेट कलर is red and number of students is 40. fraction we have to find. सबसे पहले हम ये टेबल रीड करते हैं, फिर वन बाय वन हम फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे. देन ब्लू 30 students, then brown is liked by 20 students, yellow is liked by 10 students. First we'll do the total. Okay, so 40 and 30 70, 70 and 20 90, 90 and 10 100. Okay, सो अब रेड के लिए हम फ्रैक्शन निकालते हैं. सो 40 बाय 100 हो गया, राइट. एंड अगर हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म करें दैट वुड बी 2 बाय 5. ओके, एंड देन ब्लू के लिए हमें निकालनी है, तो यहाँ पर 30 बाय 100 आ गया एंड द फ्रैक्शन वुड बी 3 बाय 10. ओके, एंड अब ब्राउन के लिए निकालनी है हमें, तो 20 बाय 100, 20 बाय 100 टोटल. Okay, and it would be 1 by 5, and for yellow 10 and total upon 100 equals to 1 by 10. So these are the fractions. Okay, and we have to represent it here. So the largest part is basically red. So this part is red. Okay, and it would be 40. Okay, and then the largest one is this one, so blue, which is 30. Okay, means 3 by 10 this is the part, and this one is the 2 by 5 part of the circle. Then we have brown, which is this one, and the 1 by 5th part of the circle. Okay, brown means 20, and yellow liked by 10 students, which is the 1 by 10 part of the circle, this one. So yellow 10. This is how we represent the data on pie chart. Okay, then second, Rishabh conducted a survey. He asked 80 children which kind of books they liked. The data is given below. Find the fraction and fill in the circle graph. तो ऋषभ ने एक सर्वे कंडक्ट किया और 80 चिल्ड्रन से पूछा डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स के बारे में, उन्हें कौन सी पसंद है, एंड डेटा इज गिवन है. सबसे पहले हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है, फिर यहाँ पर सर्कल ग्राफ को फिल करना है. सो फर्स्ट आई विल रीड द टेबल, books and number of students. Then there is a column fraction. Maths is liked by 30 students, English is liked by 10 students, computer is liked by 20 students, and science is liked by 20 students again. So first we have to do the total for this part. 30 and 10 40, 40 and 20 is 60, 60 and 20 is 80. Okay, so maths, we have to write the fraction 30 by 80, right? So 3 by 8. Okay, and then we have 10, so 10 by 80 equals to 1 by 8, right? And then 20 by 80 means 20 upon 80 equals to 1 by 4, and similarly for this one 20 by 80 equals to 1 by 4. Okay, so first we have to divide this circle into 8 parts. Okay, so I'll just let you know how to make the divisions. Okay, so you need to make the division with the help of pencil only. Okay, because we need to rub some parts as well. So first we have to divide this circle into 8 equal parts. Okay, so first make a half, then another line which divides into, now we have 4 equal parts, right? Then I can make this line like this. Okay, then I can make line like this.
Okay, now you can count 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now we have 8 equal parts, right? So maths is liked by 3 by 8, means 1, 2, 3. Or from here also 1, 2, 3. So this much part. So you can rub in between lines this part, this much part. Okay, and you can write it here maths, which is 30. Okay, then English is liked by 10 students. The fraction is 1 by 8, right? So this part, right? Only 1 by 8, so this much part. So I'll write here English and 10. Okay. Then computer is liked by 20 students and the fraction is 1 by 4. So we have to make this into 8. So how do we make this? Multiply by 2. We already know this, right? So 2 by 8 and here also 2 by 8 because the same 1 by 4, 1 by 4 equals 2 by 8. It means we have to rub this line. Use scale and pencil for the proper measurements. Okay, I am doing it without the ruler. That's why these are not that much perfect. Okay, correct, or you can say. So this much part is a computer, which is 20, and the remaining one part, this much part. Okay. So this much part is science. Again, which is 20. Okay, so this is how you need to draw a pie chart. Okay, then we have third question. 100 boys were asked which kind of sports they like to watch. Look at the table that give their replies and label the given circular graph. तो 100 बॉयज से पूछा गया कि उन्हें कौन से टाइप्स का स्पोर्ट्स पसंद है देखना, एंड ये टेबल हमें गिवन है उनके रिप्लाईज के अकॉर्डिंग, एंड हमें इस टेबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है सर्कुलर ग्राफ पर डेटा. ओके, सो स्पोर्ट्स एंड नंबर ऑफ बॉयज, दीज आर द टू कॉलम्स. क्रिकेट 65, हॉकी इज लाइक्ड बाय 10 boys, football is liked by 25 boys. Okay, so first you need to calculate the fraction. Okay, you can find fraction. The total is 100 because it is already written here, right? 100, and first you need to calculate fraction. Okay, then after calculating the fraction, you have to look at the largest denominator. Then you need to divide the circle into that much part, and then according to the fraction you need to make divisions. Okay, so you can do this question by yourself for your practice. Okay, bar graphs. Given here is a bar graph. This graph represents the food some children brought to a picnic. तो ये जो गिवन है ये एक बार ग्राफ है जो कि शो करता है फूड ब्रॉट टू अ पिकनिक. दिस इज द टाइटल. Okay, and it has two axes, vertical axis or vertical scale or horizontal scale. Okay, vertical scale represents number of children from 0, 5, 10, 15, 20 and 25, and horizontal axis represent types of food. Dosa, sandwich, poha, idli, no food. Okay, from the graph we get the following information. Most children brought sandwiches for the picnic. क्योंकि जो बार थी वो सबसे हाईएस्ट सैंडविचेस की थी, तो उससे हमें पता चल गया कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स सैंडविचेस लाए थे पिकनिक पर. देन 5 चिल्ड्रन डिड नॉट ब्रिंग एनी फूड फॉर द पिकनिक. 5 बच्चे जो थे वो कुछ भी नहीं लाए थे पिकनिक के लिए. Then the least number of children brought पोहा. सबसे कम नंबर में बच्चे पोहा लाए थे.
and an equal number of children brought dosa and idli. और equal number में ही dosa and idli लाए थे students, and the number of children who went for the picnic are 15 plus 20 plus 10 plus 15 plus 5 equals to 65. जितने पिकनिक पर गए थे बच्चे, जो भी बार्स होंगे उन पर जितने नंबर्स आ रहे होंगे उनको हमें ऐड कर देना है, देन यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके. Exercise 12B. First, this bar graph shows the number of people who use the metro on Tuesday. तो ये बार ग्राफ यही शो करता है the metro used by people on Tuesday. Okay. So the vertical axis represent number of passenger from 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, and the timing is given on the horizontal axis, which is 6:30 a.m., 10:30 a.m., 12 noon, 4:30 p.m. and 7:30 p.m. Okay, so here you can see at 6:30 a.m. 250 people, then at 10:30 a.m. there is 500, then at 12 noon there is 400 people, and then 4:30 p.m. there is 350 people, and then at 7:30 p.m. there is 600 people. Okay. Then read the bar graph carefully and answer the following questions. A. At what time did the least number of people use the metro? कौन से टाइम पर सबसे कम लोगों ने मेट्रो यूज की? The answer is 6:30 a.m. which was 250 people. Okay. Then B part, at what time was the metro most crowded? सबसे ज़्यादा most crowded कब थी? Answer is 7:30 p.m. Then C, at what time in the morning did the number of passengers double? Number of passengers double हो गए थे. The answer is 10:30 a.m. Okay, 6:30 पर 250 थे, 10:30 पर 500 हो गए. That is the double. Okay. Then D, how many people use the metro on Tuesday? Tuesday को total मिलाकर कितने लोगों ने use की? So जो भी वहाँ पर numbers आ रहे हैं different timings के लिए, उन सबको add करेंगे, then you will get 2100 people. Okay. Then E part, what was the difference in the number of passengers at 12 noon and 4:30 p.m.? 12 noon में जो लोग थे that is 400 people, and 4:30 p.m. में 350 people. So 400 minus 350 you will get 50. That is the difference. Okay. Second, this bar graph shows the quantity of milk sold by a dairy during a week. तो ये जो बार ग्राफ है ये शो करता है कि मिल्क सोल्ड बाय अ पर्टिकुलर डेयरी. ओके, दैट इज द टाइटल, मिल्क सोल्ड ड्यूरिंग अ वीक. एंड ऑन वर्टिकल एक्सिस वी हैव मिल्क सोल्ड इन लीटर्स, 0, 50 liters, 100, 150, 200, 250 up till 300. Then the horizontal axis shows the days, which is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, and you can see the graphs, bars. Okay. Now read the bar graph carefully and answer the following questions. A part, what was the quantity of milk sold during the week? Total milk कितना sold हुआ हमें ये पूछा है, तो हम सबका यहाँ पर 150 है, यहाँ पर 200, देन यहाँ पर 100, यहाँ पर दिस इज 175. 150 और 200 के बीच में दैट इज 175. ओके, एंड फ्राइडे को विच इज 125, एंड सैटरडे को 150, and Sunday को 50. Okay, so you need to add these numbers. 150 and 200 makes 350, then 100
which is equal to 450, then 175, which is equal to 450 plus 175 is 625, and if we add 125 to it, it will make 750, then 150, which will make 950 liters of milk sold during the week. Okay, answer is 950 liters. Then B part, how much more milk was sold on Thursday compared to Friday? So Thursday को 175 sold हुआ and Friday को 125. So we have to compare. It means we have to find the difference. 175 minus 125, answer is 50. Okay, 50 liters ज़्यादा sold हुआ Thursday को. Then C part, on which day was the least quantity of milk sold? कौन से दिन पर सबसे कम quantity sold हुई milk की? The answer is Sunday, because the bar of Sunday is the lowest one, right? Then D, on which day was the most quantity of milk sold? Most quantity कब sold हुई milk की? Okay, the answer is Tuesday. And E part, how much milk was sold on Wednesday and Sunday together? Wednesday और Sunday को दोनों को मिलाकर कितना sold हुआ? So Wednesday is 100 and Sunday is 50. Total is 150 liters. Okay. Objective skill, multiple choice questions, MCQs. Pick the correct option. A, data collected can be represented in the form of dash. हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फर्स्ट पिक्टोग्राफ, सेकंड बार ग्राफ, थर्ड सर्कल ग्राफ. आंसर इज सर्कल ग्राफ. देन बी, एवरी बार ग्राफ मस्ट हैव डैश. वी हैव ऑप्शन फर्स्ट टाइटल, सेकंड हॉरिजॉन्टल स्केल, थर्ड वर्टिकल स्केल. आंसर इज टाइटल. देन सी, सर्कल ग्राफ ऑल्सो कॉल्ड डैश. वी हैव ऑप्शन first pictograph, second bar graph, third pie chart. Answer is pie chart. Then D, to make a circle graph we use dash. We have option first circle, second symbols, third rectangular bars. Answer is circle. Creative skill, mental math. Question 1, the temperature recorded for 7 days in a city is as follows. 7 days के लिए जो temperature record किया वो हमें यहाँ show किया है. In the two columns, day and temperature. Day, Monday 29 degrees Celsius, Tuesday 35 degrees Celsius, Wednesday 39 degrees Celsius, Thursday 42 degrees Celsius, Friday 38 degrees Celsius, Saturday 42 degrees Celsius, Sunday 43 degrees Celsius. Prepare a bar graph and answer the following question. So you need to prepare a bar graph for this information given. Okay, and you have to make a vertical scale and horizontal scale, right? And on the vertical scale you have to mark these temperature, and on the horizontal scale you have to mark days. Okay, and then you can draw the bars. Bars should be of equal length, not the height. Length should be equal and the gap between them should be equal. Okay, and you need to use the scale and pencil for preparing the bar graph. Okay, you have to prepare it by yourself, and then you need to answer some question. I'll just explain these questions to you all. A part, which was the hottest day? सबसे गर्म दिन कौन सा था? So after preparing the bar graph, you have to look at the bars. The highest one shows the hottest day, right? Then B part, what is the difference between the highest and the lowest temperature? Then highest और lowest temperature में difference यानी कि subtraction करना है. Bars देखने के बाद पता चल जाएगा highest जो है and lowest उनके बीच का minus कर देना, subtraction कर देना. Okay. Then C part, which 2 days were equally hot? कौन से दिन में temperature same है ये पूछ रहे हैं. And D part, what was the temperature on Monday? Monday को क्या temperature था वो यहाँ लिखना है. Okay,
So you have to do these questions as well by yourself. Then second question, Deepika opened her money bank and a heap of coins of 1 rupee, 2 rupee, 5 rupee and 10 rupee came out. She quickly made a tally chart to show the amount which was in her money bank. Compute the tally chart and answer the questions. तो दीपिका ने अपना मनी बैंक ओपन किया और हीप ऑफ कॉइन्स 1 रुपी, 2 रुपी और 5 रुपी, 10 रुपी बाहर आए एंड देन उसने इसका टेली चार्ट एक प्रिपेयर किया है ताकि वो अमाउंट को शो कर सके मनी बैंक में. अब हमें टेली चार्ट को कंप्यूट करना है. ओके, देन वी नीड टू आंसर सम क्वेश्चंस एज वेल. देयर इज 3 कॉलम्स, कॉइन, टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. 10 rupees. So one bundle of this telemarks represent 5. Okay, so 5, 5, 5, 5. 5 into 4 is 20. Frequency is 20 for this one. Then 5 rupees. 1, 2, 3. 3 is 15. 3 into 5, 15. Then 1, 2, 3. 18. Right? Then 2 rupees. 1, 2, 3 means 15 plus 2. 17. Then 1 rupee. 1, 2, 10. And 1, 2, 3, 13. Okay. Then A part, which coins are minimum in number? Minimum means सबसे कम कौन से हैं? The answer is 1 rupee coin. Okay. So 1 rupee. And B part, which coins are maximum in number? सबसे ज़्यादा कौन से coins हैं? Answer is 10 rupees coin क्योंकि उनकी frequency 20 है, right? And then C part, how many less are the 5 rupee coins than 10 rupee coins in her collection? डिफरेंस बताना है 5 रुपी कॉइन्स में एंड 10 रुपी कॉइन में. 10 रुपी कॉइन 20 है एंड 5 रुपी कॉइन 18 है. 20 माइनस 18 इज 2. सो यहाँ पर 2 कॉइन्स का डिफरेंस है. ओके. So I hope kids you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye bye.